Hello children, this side Sarika. So I'm here with two more topics, right? Now here, the fundamental theorem of arithmetic and Euclid's division algorithm, right? In both these topics, what we do, we just do the division and all, finding the HCF, right? Having the quotient remainder when we divide. So what happens in here, the fundamental theorem of arithmetics, we just find the HCF and the LCM. So there is a formula for HCF and LCM. In my previous video, I've already explained how to find HCF, how to find LCM. Now here, there is a formula HCF into LCM. Whenever we get the HCF and we get the LCM, when we multiply them, that is equal to the product of the two numbers. Suppose the two numbers are A and B, right? So the two numbers, when we multiply them, we get some answer, and here the HCF and LCM, when we multiply them, we get the answer, and those two answers, they should be same, right? So this says, the fundamental theorem of arithmetic says that finding the HCF, sometimes in this formula, sometimes, right, HCF will be missing or LCM will be missing. There are four terms, right? Two numbers will be given, LCM will be given, you will be asked to find the HCF. So you can use this formula. कैसे? LCM आप डाल देना, you just put the values of A and B, divide by LCM, तो आपका HCF आ जाएगा, right? अगर आपको HCF has been given, आपको LCM निकालना है, so आप A और B की वैल्यू डालो, HCF से डिवाइड करो तो आपका LCM आ जाएगा, whatever, right? अगर आपको one number has been given and you are supposed to find the other number and HCF and LCM is given, so HCF डालो, LCM डालो, अगर A is given तो A से डिवाइड करो, HCF into LCM on A, do the calculations and you will get the other number B. So I hope this fundamental theorem of arithmetic is clear, related to just HCF and LCM, right? Now, what is Euclid's division algorithm? Euclid's division algorithm is an algorithm which helps us to find the HCF. आप एक HCF निकाल सकते हो इस मेथड से. What is that formula? A is equal to BQ plus R. What is A? A is one number. What is B? B is another number. A और B का you are supposed to find the HCF. तो वो दो numbers A and B है. Here Q is the quotient. जब आप when you divide, right? Suppose आप A अंदर डालते हो, B से डिवाइड करते हो, quotient आपका Q आता है और यहाँ remainder आपका R आता है. R is the remainder. So these are the terms, right? A, B, Q, R, right? Remainder, quotient, and the two numbers here. What you have to do here is that how to solve it by division algorithm. Algorithm means a step-by-step process, right? Now you have two numbers. The bigger number has to be this side, right? Here A will be greater than B. So bigger number has to be on the left side, right? So आप इसको यहाँ पे A डालोगे 225. What you will do? 225 को आप you will be dividing by 135, right? You will find out the quotient. Quotient Q, here it is 1, remainder is this. So when we divide, so 135 ones are 135, when we subtract we get 90 and this is the remainder and this is the quotient, right? So how do we write this? First step is written as the bigger number is equal to 135 multiplied by quotient, this into this plus the remainder. Remainder part is added and quotient is multiplied by divisor. This is dividend, this is divisor, right? Divisor बाहर वाला होता है, dividend अंदर वाला. Okay. So now the first step is clear. Again in the second step, what you have to do? अब आपको क्या करना है? आपका जो ये है, जो यहाँ पे था आपका जो डिवाइजर है, now it becomes the dividend. अब ये इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? रिमाइंडर से, राइट? सो इसका जो आंसर आएगा, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड 135. जो यहाँ होगा 135, आप इसको फिर से 90 से आप करेंगे. इन द जूनियर क्लासेस आप करते थे ना, आप क्या करते थे? HCF कैसे निकालते थे? राइट, दिस वे. 135 का अंदर चला जाता है, फिर आप इसको और मल्टीप्लाई करते हैं. दिस वे यू फाइंड आउट द HCF, द जूनियर क्लासेस, राइट? तो वो सेम है, राइट? अब आपने क्या करना है? 135 इस साइड लिखना है, 90 से डिवाइड करना है. सो दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर एंड सो ऑन. देन व्हाट यू हैव टू डू नाउ, दिस 90, अब ये जो 90 है, जब यहाँ रिमाइंडर आएगा, राइट, तो 90 अंदर जाता है, तो 90 कम्स दिस साइड, वो डिविडेंड बन गया. अब डिवाइजर यहाँ पे 45 होगा, रिमाइंडर जो यहाँ बचता है उससे आप डिवाइड करते हो, तो देन क्वोशिएंट रिमाइंडर. दिस प्रोसेस इज डन टिल द रिमाइंडर कम्स 0. जब आपका आंसर 0 आ जाता है रिमाइंडर का, तो यू स्टॉप द डिवीजन. आप यही तो करते हो, जब आप करते जाते हो, जब आपका यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, क्रॉस लग गया यहाँ की, सब माइनस करके 0 आ गया,
then you stop that division, right? So here also it's done the same way, right? I'll repeat this again. What is Euclid's division algorithm? It is used to find the HCF between two numbers, right? 225, 135 were the two numbers. So इसको आपने ऐसे divide करना है. Then you have to write it in this form. This is the dividend. This is the divisor जिससे आप divide करते हो. जो आपका quotient आता है वो यहाँ आएगा. जो आपका remainder है वो यहाँ आएगा. Next step में जो यहाँ का what is this? It was divisor. अब ये dividend बनेगा. आपको इसको इधर लाना है. 90 comes here. फिर फाइंड आउट करो इसको इससे डिवाइड 135 by 90. क्वेश्चन कम्स 1, रिमाइंडर दिस. अगेन द सेम प्रोसेस. 90 जो यहाँ था डिविडेंड, दैट बिकम्स द डिवाइजर बिकम्स द डिविडेंड. फिर वो 45 से डिवाइड होगा. जब आप रफ में 45 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 2 एंड द रिमाइंडर कम्स 0. अब नाउ द रिमाइंडर कम्स 0. सो दिस इज द लास्ट स्टेप. सो व्हिच इज द HCF जो डिवाइड करता है. 45 has divided 90 perfectly, so HCF will be 45. लास्ट में जाके जब लॉन्ग डिविजन करते थे, जब 45 ने कर लिया, 45 टू 90, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया. सो दिस यूज्ड टू बी द HCF. ये वही सेम प्रोसेस है जो आप डिविजन आप निकालते हो HCF बाय डिविजन मेथड. सो दैट इज रिटन इन द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म. बस एक एक स्टेप लिखते जाते हैं. जैसे ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है. फिर ये इधर जाता है 90, इधर आता 90 की टर्म्स इसको डिवाइड करते हैं, quotient, remainder, and so on. So I hope these two topics are clear. The fundamental theorem of arithmetic deals with this finding out HCF, LCM. This is the formula HCF into LCM, A into B. Sometimes A is missing. LCM HCF दिया होता है, B दिया होता है. Sometimes B is missing. Sometimes LCM is missing. Sometimes HCF is missing. तो इसमें 4 terms है, उसमें से एक missing होती है. You're asked to find out the answer of the any one of the term, right? So what Euclid's division algorithm? Euclid's division algorithm कुछ नहीं है. It's just a method to find the HCF. In the smaller classes used to divide it. Long division करते जाते हो, divide करते जाते हो, divide जो आपका आपने जिससे इसको डिवाइड किया होता है फिर वो जाके अंदर जाता है, रिमाइंडर से डिवाइड करते जाते हो. सो इट इज जस्ट सेम रिटन स्टेप बाय स्टेप फॉर्म, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच हैज बीन यूज्ड. ए इधर आता है, बी आता है, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके चिल्ड्रन, सो यू कैन ट्राई अदर क्वेश्चंस राइटिंग इन दिस फॉर्म. Okay, so now we'll do the next topic, children. So students, I have written 2 questions. Let us do these questions here, right? I gave you that formula of fundamental theorem. If LCM you have to find, HCF is given 15, one number is 45 and the other number is 105. So you have to apply this formula, HCF multiplied by LCM. HCF into LCM is equal to the product of the two numbers, right? Now you are supposed to find LCM. So you just keep LCM here and A multiplied by B divided by HCF. HCF comes here down, right? So now here you have to find out LCM. So let us substitute the value. I have already substituted there, right? I need to calculate, right? Do the calculations, cutting and all. 45, B is 105 and HCF is 15. Now let us cancel it by the table of 5. So 5 3s are 15, right here. So let me divide this. 5 2s are 10, 5, right? 21. So 3 1s are 3, 3 7s are 21. So I'm left with here 45 multiplied by 7 and that is 315. So we can use this formula, right? HCF was given, A was given, B was given. We calculated LCM. So in the same way, right? हो सकता है आपको LCM will be given and you are supposed to find HCF. तो आप ऐसे ही कर लेना. अगर आपको HCF you have to find तो आप LCM को नीचे लेके आना, A और B वहीं पे होंगे. अगर A मिसिंग है तो आप LCM HCF को वहीं रखोगे, B को उनके नीचे लेके जाओगे, like that accordingly, right? So I hope it's clear. Out of 4 terms, 3 are given, 4th one we just calculated. Now there is another question now. Prove root 2 is irrational. Prove root 3 is an irrational number. Prove that root 5, root 7, they are rational numbers. So I'll explain this root 2. That will be same process for root 3, root 5. You can try yourself, right? So now, okay, whenever we prove something in mathematics, we assume something, right? So let us assume that root 2 is rational. But we have to prove irrational. हम start rational से करेंगे और last में जाके we'll prove that that assumption, our prediction is wrong, right? तो फिर we'll start with assumption. Let us assume, right? Let root 2 be a
rational number. Rn means rational number. So if root 2 is a rational number, so it will be of the type P by Q form. You can use P, Q also, A or B also. Alphabets different, right? So here I am using A upon B. So if I have assumed, let root 2 is a rational number. So A by B form में होगा, right? Now squaring करो, squaring both sides ही होगी obviously. So here root 2 का it will be 2 and here it will be a square by b square. Then you will multiply here b square 2b square हो जाएगा. मैंने पहले a square I have written, right? So इस step के बाद क्या करना है? Squaring both sides. So squaring means root 2 into root 2 is 2, a का square और b का square हो गया. Then I cross multiplied this here. So a square will be 2b square, right? So here a square is a multiplication. A square can be multiplied by 2. There is a common factor 2 in front. So it shows that a square is divisible by 2, right? क्योंकि जब आपका 2 कुछ common होता है आगे, तो it means it is divisible by 2. तभी common आया, right? So a will also be divisible by 2. A is also divisible by 2, right? अगर उसका square divisible है, like 4 is divisible by 2, तो उसका square root लोगे तो 2, right? That is will be also divisible by, like I'll say like 81, right? It is divisible by 3. 81 किसका square root है? 9 का. So 9 will also be divided by 3, right? So उसका जगह square divisible है 2 से, so a भी divisible होगा 2 से. I hope it's clear. So now it's clear that जो a है that is divisible by 2. So a can be written as 2c. 2 का multiplication के form में हम लिख सकते हैं, right? जैसे यहाँ a square 2 something था. So a can be written as 2c. C is another alphabet I have used. यहाँ कुछ भी हो सकता है, right? You can write d also. So a is divisible by 2 मतलब a will be a multiple. A here will be a factor common 2. So आप 2c लिख लो. अब इसको आप a की वैल्यू को आप यहाँ डाल दो, right? Let this be equation 1. Now if we will substitute here 2c, तो ये क्या बन जाएगा? It will become this, right? What we did, a square था, मैंने a की वैल्यू 2c डाली, तो वहाँ बाहर square है, तो I have to square it, right? 2 का square means 2 to the 4, c square, that will be 2b square, right? आप 2 cancel कर सकते हो इसके साथ, तो आपका आ जाएगा 2c square is equal to b square, right? Rest I'll do here. Now b square कितना आया? So b square is equal to 2c square, right? So it means b square, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, divisible by 2. So it shows that यहाँ 2 आ गया, तो b square is divisible by 2. So b will also be divisible by 2. B is also divisible by 2. Now a is also divisible by 2. B is also divisible by 2. So there is a common factor 2. तो ये fraction जो है, अगर इसमें कुछ common factor है, तो ये rational number तो नहीं होता. Rational number में there is no common factor. So right. So a and b has 2 as common factor. So root 2 is not a rational number, right? So root 2 is an irrational number. Hence proved, right? I'll repeat it again. Now see children here. What happens when you have to prove root 3? You can do the same thing for root 3. यहाँ root 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, and so on. If it is a question of root 5, so here it will be root 5, here will be 5, and accordingly, right? So here when we have to prove that root 2 is irrational, let us assume, we start with the assumption. So I'm assuming here that root 2 is rational. Proof तो हमें irrational करना है, but I am assuming कि suppose ये rational होता, अगर ये rational होता तो we can write this root 2 in the form p by q form, numerator denominator. So I have written in the form a by b, right? Then squaring both sides, right? जब भी आप स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर्स लग जाएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट a स्क्वायर. a स्क्वायर जो है उसके पास एक 2 आ रहा है, देयर इज 2 हियर, दिस 2. जब भी ऐसे 2 आता है, इट मीन जो a स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कॉमन तो आ ही रहा है. सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर स्क्वायर किसी का नंबर स्क्वायर फॉर्म में डिविजिबल होता है 2 से, तो वो नंबर स्क्वायर के अलावा जब व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट तब भी डिविजिबल होता है, राइट? इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2,
तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, a का भी एक कॉमन फैक्टर 2 होगा, राइट। नाउ अगर a का कॉमन फैक्टर 2 है तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, कि 2 की टर्म्स में a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, समथिंग कैन बी c d e f व्हाटएवर m n, सो 2 तो लगा लिया, दैट इज मेन थिंग, सो a is 2 into something, so अब this value, this just substitute in equation 1, so equation 1 क्या थी, a square, आपने a क्या डाला है 2c, a की जगह हमने यहाँ डाला 2c, इसमें डाला यहाँ, राइट, सो 2c डाला यहाँ, सो इट बिकम्स 4c स्क्वायर और 2b स्क्वायर एज इट इज, सो 2 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 2c स्क्वायर और b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर मीन्स सीधा लिख दिया मैंने वहाँ, राइट, इट मीन्स दिस थिंग, सो b स्क्वायर जो है इसका भी 2 कॉमन फैक्टर है, बिकॉज 2 इज देयर एज इन केस ऑफ a स्क्वायर, b स्क्वायर में भी है, सो वी विल से दैट b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 आ रहा है आगे, सो सिमिलरली b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2, सो a भी डिविजिबल बाय 2 है और b भी डिविजिबल बाय 2, मतलब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिविजिबल है, मीन्स देयर इज अ कॉमन फैक्टर, सो अगर कॉमन फैक्टर है तो देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, सो इट इज रूट 2 इज नॉट अ rational number, root 2 is an irrational number and hence proved. I hope it's clear. यहाँ पे we use this formula, right? इसमें 3 terms will be given, fourth वाली आप you can find out. यहाँ पे क्या करना है आपको prove करना, there is a full question in the book also, right? Prove that root 2 is irrational, prove that root 5 is irrational, prove that root 3 is irrational. Same process, right? पहले आप इसको मान लो कि rational है, फिर स्क्वायरिंग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर को बोल दो डिविजिबल है, a भी डिविजिबल है, इस a की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट है तो b भी आ जाता है डिविजिबल बाय 2, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है, सो it is not a rational number, it is an irrational number. Okay children, okay, now we'll do the next question. Now children, you can see 2 more questions on the board now, right? Let us solve them. Now there is a question like you have to prove that 15 plus 17 root 3 is an irrational number. Earlier I explained how to prove that root 2 is an irrational number. Same way that will be root 3 an irrational number. Same method for proving root 7 is an irrational number and root 5 and so on, right? But if this is not only root 3, there it is 15 plus 17 root 3, so how to prove that it is irrational, right? So again we'll start with the assumption only. So suppose this question is a rational number, I'm writing Rn for rational number. Now if it is a rational number, so it will be of the type a by b, p by q form, right? So now let us simplify this. 17 root 3 remains here, a by b, 15 goes to that side. After simplifying that, it becomes, taking the LCM, here it's 1, it becomes 15b. So it means here root 3 is equal to a minus 15b upon 17b. 17 also comes down here. So this becomes of this type. Now, in the left side we have root 3, in the right side we have this number. So it shows here that we are already, right, you can prove it again that root 3 is an irrational number in that question, but I'm writing directly that root 3 is an irrational number, right? So on the left side it is irrational, and the right side, this one, if we separate the terms, we'll get a by 17b and minus 15 by 17, b cancel, right? B by b cancel. So here this is a rational number, a by b form, this is a rational number. So on the left hand side we have irrational number, and on the right hand side we have rational number, and they are not same, right? We can't prove that left side is irrational, so right has to be rational, but it shows that it is a rational number, so it is a contradiction. Our assumption is wrong. हमने जो assume किया था कि वो rational number होगा, जब हम prove करने लगे तो then our assumption that proved wrong. So assumption is wrong, हमारा जो assumption है that is contradicting, right? वो opposite जा रहा है. So on the left side we are getting irrational, on the right side rational. It means our supposition is wrong. Supposition means what we have supposed. हमने क्या suppose किया था, हमने क्या assume किया था that it is a rational. So our supposition or assumption is wrong. So ये wrong है हमारी assumption कि ये एक rational number है. So we will say in the last that 15 plus 17 root 3
is an irrational number. I hope it's clear, children. So I'll repeat these two questions again, right? Okay, I have to do this question. I've not done this question, sorry. Okay, I'll explain this again, right? When you have to prove that 15 plus 17 root 3 is an irrational number. So you already know that root 3 is an irrational number. So you can prove earlier that root 3 is a rational number. Just do the same steps I've done. So then prove that root 3 is an irrational number. I'm not going to prove it again here. So when you take the question, you assume that this whole, suppose it is a rational number. Agar rational number है, so we can equate it to a by b, p by q form. हमने कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो. 15 goes to that side, एलसीएम लिया तो ऐसे आ गया. 17 को भी आप नीचे लाओगे तो it becomes this way. जब आप इसको सेपरेट कर दो, a by b रैशनल फॉर्म आ गया, और यह तो भी है ही नहीं, 15 by 17 तो रैशनल फॉर्म आ गया. सो लेफ्ट साइड पे इज रूट 3, राइट साइड पे इज दिस. सो लेफ्ट साइड का जो रूट 3 है दैट इज इरैशनल और राइट साइड इज रैशनल. सो वो तो सेम आना चाहिए. इधर को लेफ्ट साइड में रैशनल इक्वल्स टू रैशनल, इरैशनल इरैशनल. तो हाफ इज नॉट इक्वल, इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल. So our supposition or assumption is wrong. So this has to be an irrational number. Okay, now the next question. I'll write this here. Okay, now what is the next question? Now you have to write two rational numbers. Now you know what are rational numbers, what are irrational numbers. Suppose you are asked to write two rational numbers between two given numbers, right? Suppose these are the two given irrational numbers, right? Root 2 and root 3 are irrational numbers. आपको इसके बीच में two rational numbers लिखने और two irrational numbers लिखने. Okay, first you should know the value of root 2, that is 1.41421 and like that, right? If you don't know the value, you have to find the square root. Square root जैसे भी निकालते division method से. But root 2, root 3 values we learn, right? So root 2 is equal to 1 point this and so on. It is non-terminating. Root 3 is this 1.73205 and so on, right? अब इसके बीच में हम two rational numbers लिखेंगे. ये तो irrational है क्योंकि never ending है, non-terminating है और non-recurring है. Never ending है, non-terminating और non-recurring है. अब rational number कैसे लिखे हम इनके बीच में? रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर. या तो आप इनके बीच का कोई टर्मिनेटिंग नंबर लिख दो या फिर आप उसको रेकरिंग कर दो, राइट? सो दो लिखती हूँ मैं इसके. 1.41, लेट अस सी द स्टार्टिंग डिजिट्स, राइट? सो आई कैन राइट 1.5. इट लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स, राइट? या तो आप टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दे दो एक एंड नॉन टर्मिनेटिंग का भी दे दो. 1.61616161 recurring, 1.61 bar. So I have given example two rational numbers का which lies between में आने चाहिए इसके और इसके. between में आने के लिए you have to see this, इधर ये 1.4 something है और ये 1.7 something है. So इसके बीच में आएगा 1.5 या 1.6. So आप 1.5 को लिख दो तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो गया. आपने टर्मिनेटिंग वाला आंसर दे दिया. एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हम लिख सकते हैं लेकिन वो रेकरिंग होना चाहिए. रेकरिंग के लिए आप 6161 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1.555 लिख लो, लेकिन इसके बीच में आना चाहिए इसके और इसके. So it's easy to write two rational numbers. Now how to write irrational numbers? वो भी easy है. आप non terminating लिख लो और non recurring लिख लो. So इनके बीच में होने चाहिए तो हम 1. जरूरी नहीं है 5, हम यहाँ 8 भी कर सकते हैं क्योंकि here it's 41. I'm taking 48 तो वो भी लाइक करता है इसके बीच में. 4 8 3 4 5 2. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रेकरिंग हो गया. कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. सो आप एक और लिख लो 1.456 1.67 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1.7 से छोटा होना चाहिए, 1.4 से बड़ा होना चाहिए. सो 1.67860543 कुछ भी लिखते जाओ, बस वो सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रेकरिंग नहीं होना चाहिए. रेकरिंग हुआ तो इट विल बी रैशनल. तो रैशनल में मैंने रेकरिंग लिखा और एक टर्मिनेटिंग वाला लिखा. इरैशनल में तो होता ही नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट्स तो आना ही है पर रिपीट नहीं होते हैं तो डिफरेंट डिजिट्स लिखे. सो दिस इज द इजी वे टू राइट two rational numbers between two given numbers and two irrational numbers between two given numbers. I hope these type of questions you'll be able to do now. कोई numbers आपको दिए हैं उनकी पहले तो डेसिमल वैल्यू लिखो. डेसिमल वैल्यू के बाद उसके रैशनल नंबर्स पूछे हैं या तो टर्मिनेटिंग का आंसर दे दो, नॉन टर्मिनेटिंग का दो लेकिन रेकरिंग दो जो रिपीट होता हो. और इरैशनल के लिए तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग ही देना है. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ उसको नॉन रेकरिंग बनाना है. कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है. रिपीट मतलब एक पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए. ऐसे तो डिजिट रिपीट यू कैन रिपीट लाइक 1.48348333 ऐसे 48 रिपीट हो सकता है लेकिन वो सेम पैटर्न नहीं है. 483 48333 तो सेम पैटर्न नहीं है. लाइक 61 था जैसे उसमें
पूरा का पूरा 61 रिपीट हो रहा था, तो आप रिपीट कर सकते हैं डिजिट्स, बट एक पैटर्न में वो डिजिट्स नहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं कि लाइक 416 416 416, ऐसा सेम नहीं आ रहा है. सो आई होप इट्स क्लियर चिल्ड्रन. नाउ लेट मी सी मोर क्वेश्चंस. आई विल टेक मोर क्वेश्चंस. Yes, children. Now I have written the last question, right? So what is the question? Without dividing, state if the following rational numbers are terminating or non-terminating. So how to prove terminating and non-terminating, right? So these are the rational numbers. You have to prove that terminating or non-terminating, right? So there is simple method. We have p by q, numerator and denominator. We just have to check the denominator in factors. If q is of the form 2 and 5 in the power of 2 or in the power of 5, means there are 2 to the power 4, 5 to the power 6. If we have these two factors in the denominator, then it is terminating. If we have some other along with these, like I have 3, 2 to the power 4, 5 to the power 3, but there is 3 also. So there shouldn't be 3. Then it is a non-terminating, right? So I have written 3 questions here, 17 by 8. Writing them in factors, 8 can be written as 2 to the power 3. So we can have either of one, 2 भी हो सकता है, right? It can be 2, it can be 5, और दोनों भी हो सकते हैं, पर कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, right? So there is 2, yes, in terms of 2, so it is terminating, right? Co-terminating decimal. Let us see the next one, 15 by 1600. So 15 can be written as 3 into 5. So we are not interested in the numerator, we are interested in the denominator, q. So q is in terms of 2 and 5. 2 and 5. 2 की कुछ power है, 5 की कुछ power है. Yes, it is terminating decimal. I am writing TD, terminating decimal. Now this one, we have 5, that is correct, but we don't want 7 and 13. So q is in the terms of, q is in terms of 7 and 13. So it is non-terminating decimal. Right? So I hope it's very simple to see the denominator, the factors of denominator. अगर factor denominator का सिर्फ 2 की terms में, yes it is terminating. अगर 2 और 5 दोनों है, yes it is terminating. अगर अकेला 5 भी है, like I'll write one number here, 16 by 25. So it will be 16 by 5 square. Again, the 5 is alone, so it is also terminating decimal. So अगर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे 2 and 5, so it is terminating. अगर 2 भी होगा 5 भी होगा, उसके साथ और factors भी होंगे 3, 13, 17, no, then they are non-terminating. So I hope it's clear. 2 था तो terminating, 2 and 5 था तो terminating, 7, 13 था, we don't need 7, 13, so it is non-terminating decimal. So okay children, so I'm done with this chapter here, real numbers of class 10. So now you try all other questions, right? Okay children, stay blessed. Thank you and subscribe my channel.